हेलो व्यूअर्स, आप सभी को क्रिप्टो हंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि दूसरा पार्ट में हम लोग दिखाया कैसे एक सिक्योर ईमेल क्रिएट करना पड़ेगा। आज आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे एक्सचेंजर मार्केट में अकाउंट खोला जाता है। वर्तमान में 20,000 से ज़्यादा ऑनलाइन कंपनियां क्रिप्टो एक्सचेंज सेवा प्रदान कर रहा है। उनमें से बेस्ट कोई कंपनी जैसे कि बाइनेंस, कुकॉइन, बिटमैक्स, हिटबीटीसी, कॉइनबेस, अपबीट, OKX, बिट्रेक्स एक्सेट्रा। मेरे क्रिप्टो एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बाइनेंस यूज़ करने का सजेस्ट कर रहा हूँ। बाइनेंस वर्ल्ड नंबर 1 एक्सचेंज है। ये एक्सचेंज दुनिया का सबसे अधिक कारोबार भी करती है। चैनपेंग झाओ जून 2017 में बाइनेंस स्टार्ट किया था। बहुत जल्द ये विश्व का नंबर 1 एक्सचेंज बन गया। कई देशों में बाइनेंस का ऑफिस व्यवस्था है। बहुत सारे कारण है बाइनेंस यूज़ करने का। आइए देखते हैं क्यों आप बाइनेंस यूज़ करेंगे। दुनिया में 20,000 से ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजर है। अब आप अपने मेहनत की कमाई को किसी भी एक्सचेंज में डाल देंगे। किस पर भरोसा करेंगे? ये चीज़ एक्सचेंज में आपकी व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। किसी भी एक्सचेंज में लेन देन करने से पहले आपको इस पर विचार करना चाहिए। साल 2019 में बाइनेंस से 40 मिलियन USD हैक हुआ था। बाद में बाइनेंस सभी ग्राहक को मनी लौटा दिया था। क्यों आपको बाइनेंस के बारे में सजेस्ट किया, इसके और कुछ कारण है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि ये बात जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। आप क्रिप्टो में नए हैं, आपको ऐसे एक क्रिप्टो एक्सचेंज की ज़रूरत है जिनमें ट्रेड करना बहुत ही आसान है। विदाउट एनी हेल्प आप लोग ट्रेड कर सकता। इसी के लिए बाइनेंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाइनेंस की सिक्योरिटी। बाइनेंस यूज 256 बिट SSL विच इज़ 100% सुरक्षित। ये केवल हैकिंग प्रूफ ही नहीं है, ये आपको फिशिंग वेबसाइट के भी पता लगाता है। मोबाइल 2 फैक्टर, गूगल ऑथेंटिकेशन एंड ईमेल वेरिफिकेशन दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर सिक्योरिटी। क्रिप्टो करेंसी में 7,000 से ज़्यादा कॉइन है, लेकिन बाइनेंस में ओनली 200 कॉइन के आसपास कॉइन की ट्रेडिंग चलती है क्योंकि बाइनेंस कोई शीट कॉइन के एक्सचेंज नहीं रखता। इन सब के ऊपर बाइनेंस 20% एक्सचेंज फी रिजर्व रखती है। अगर बाइनेंस हैक हुआ तो ग्राहक की मनी लौटा सकता। एक्सचेंज फी एंड सपोर्ट। बाइनेंस 0.1% को ट्रेडिंग फीस काटती है, जो अदर्स एक्सचेंज में 0.25% और मोर देन 0.50%। बाइनेंस की एवरेज सपोर्ट रिस्पॉन्स 1 आवर। तो आइए देखते हैं कैसे एक बाइनेंस अकाउंट तैयारी एंड वेरीफाई करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन द ईमेल that we already show you on the second part. Then search on Google Binance Exchange. Now click the register button. Then open the sign up page. Now put your email and password. Password must be uppercase, lowercase, numeric and special character. Now click the arrow of referral ID. You will see the referral code option. If you going to the Binance referral option, you will see 20% referral bonus they will give away. Up to 10% bonus for new user. So if you wanna get that 10% bonus, then you will get that code in my video description box and headline of Facebook page.
Now click Go to Dashboard. Now must be active Google Authenticator. First, go to the Google Play Store and install Google Authenticator app. Then scan the QR code. Now write this code in the safe place cause it is the biggest security in your account. If any hacker get access in your account, even he cannot steal your fund. Now you need to turn on authentication. So here submit your email verification code and Google Authenticator code and submit. Now your two-step verification is on. Now you can deposit from crypto, cash and credit card. Now if you wanna deposit crypto, you can search here the coin address for deposit. You can search here the coin short name. Like BTC, FTC, Ethereum, etc. Click here for the copy the address. Just one click and copy. Now you can deposit any coin. Now let's go for the verification. First go to your phone browser and log in your account. Now click the man icon and select the identification. From the personal details, click the verification. Now select your country and click the start button. Now fill up your first name, last name, residential address, postal code, city like your passport, NID card or driving license. Then submit and continue. Now NID card, passport or driving license, any of those you can use here. Upload any of those documents and continue. Now upload your picture with holding your document.
Now complete the face verification challenge. My verification declined cause this document already used for my personal account. Verification is not a big fact cause crypto naturally unidentified. My trading account also not verified. Maximum hacker steal your personal details and hack your account. So my suggestion is stay away from verification. Thanks for watching. If you like this video, please subscribe my channel and follow my Facebook page Crypto Hunt. Thanks.